Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning Computer of Class 8 by Brainroot series, and here is your book Cyber Creators. Today we are going to do chapter number 9 and the name is Python Power Up. So Python is a language, as you all know. Let's see what all we are going to cover in this chapter. So we are going to learn about the for statement. We are going to learn about the while statement, infinite loop and jump statement. So these all things we are going to cover in this chapter. Before that, let's do this exercise, this activity, which is before we begin. So write a program in Python to multiply two numbers in the space given below. तो आपको एक प्रोग्राम लिखना है Python में जिसमें आप दो numbers को multiply कर रहे हो. So do it yourself. Now, dear children, in the previous class you learned the basic concept of Python. आपने जो आपकी जो previous class थी, class 7, उसमें आपने जो है क्या पढ़ा था? उसमें आपने basic concepts पढ़े थे Python के, such as operators and conditional statements. वहाँ पे हमने operators और conditional statements के बारे में पढ़ा था. Now you will learn about the iterative statements in detail. अब जो है आप जो iterative statements के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. So the program, in a program there are many situations where we need to repeat same type of task again and again. So program में क्या होता है, कई बार हमें एक ही काम को बार बार repeat करना होता है. So in Python the statement that are used to repeat a set of instructions is called iteratives or looping. So Python में ऐसे प्रोग्राम्स को जो एक ही कमांड को बार बार रिपीट करते हैं, ऐसे कमांड्स को हम इटरेटिव या फिर लूपिंग कहते हैं. लूपिंग स्टेटमेंट्स आर वेरी यूजफुल एंड नेसेसरी फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हो सकता है कई बार एक ही प्रोग्राम को बार बार रिपीट करना पड़े. So Python provides two types of looping statements. Python हमें दो तरीके का looping statements देता है. पहला है for statement और दूसरा है while statement. Let's discuss these concepts in brief. So the for statement is the for statement executes a simple or compound statement for a fixed number of time. So for statement क्या करता है, किसी भी प्रोग्राम को एक particular number of times तक ही repeat करता है. The syntax for the for statement is given below. ये syntax है for variable in iterators. Now the statements are, so children, here the first program that is given here is to print all the days of the week. अब हमें क्या करना है, print करना है days of week. तो हमने क्या किया, हमने जो है for statement को लगाया. Program to print all the days of the week. Days is equal to Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. For x in days. Now we have to print x. तो आप देख सकते हो, when we have given this program you will get the following output. ये output हमें मिलेगा. We will get all of these in different lines. Next program is to print a pattern using the loop. अब loop को आप use करेंगे और उसके through आप क्या करेंगे, print करेंगे दिए गए pattern को. So for this program to print a pattern using for loop for a in range 1 to 10. So print star a, you will get the following result. तो आप देखेंगे 1 star, then 2 star, then 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 1 से लेके 10 तक स्टार यहाँ पे सब में प्रिंट हो गए. So this is loop statement. Now the in operator. So children, the in operator is used to check if the given value exists in the sequence. ये जो in operator इसे यूज किया जाता है ये चेक करने के लिए कि जो दी गई वैल्यू है वो एक सीक्वेंस में है या नहीं. It evaluates to true if it finds the value in a specific sequence, else it returns false. So अगर वैल्यू जो सीक्वेंस में है तो ये true देगा, नहीं तो ये false statement देगा. So let's type the syntax. This is the syntax of this. So value in, then we have written in brackets sequence. So for example, if you want to check whether the number 10 is present in the given sequence, अगर आपको ये जानना है कि जो दिया गया sequence है उसमें 10 present है या नहीं, so you have to execute the following code. So print 10 in this number. So अब अगर यहाँ पे आप देख सकते हो 10 already है तो it will give you true. So true is your
statement that it gives. This is the output. Now another one is for I in this number. I को ढूंढना है इन नंबर्स के बीच में, तो 10, 20, 30, 40 आपको क्या कहीं I दिख रहा है? नो. सो प्रिंट I. तो आप देख सकते हो कि दिस इज द आउटपुट that we get. So आप देख सकते हो 10, 20, 30, 40 these are all written in sequence here. Next is using the range function. अब range function को कैसे यूज कर सकते हैं? The range function is an inbuilt function of Python. ये एक inbuilt function है Python का. This function generates a list which is a sequence type. ये function क्या करता है? एक list को generate करता है जो sequence type होती है. The sequence, a sequence is a succession of values. ये sequence क्या है? ये succession है values का, bound together by a single name, जिसे जो है single name से bound किया जाता है. The range function is used in the for loop to iterate over the numbers. ये जो range function है इसे use किया जाता है for loop में numbers को iterate करने के लिए, means loop करने के लिए. So the general syntax of using the range function is given below. So this is range n. Now this we have to write. Generate a set of whole numbers starting from 0 to n minus 1. So आपको क्या करना है? जनरेट करना है सेट ऑफ होल नंबर्स. तो क्या एग्जाम्पल आया? रेंज 6 है बिकॉज देर आर 6 नंबर्स एंड दीज आर इक्विवेलेंट टू 0, 1, 2, 3, 4, 5. नेक्स्ट इज रेंज स्टार्ट स्टॉप. So it generates the set of whole numbers starting from start to stop 1 minus 1. So ये क्या करता है? स्टार्ट और स्टॉप वाले नंबर्स को जनरेट करता है. सो एग्जाम्पल है यहाँ पे 3 से 9 के बीच में नंबर्स जो भी है उन्हें जनरेट करना है. तो आप देख सकते हो 3 के बाद आता है 4, 5, 6, 7 और 9 से पहले आता है 8. सो दीज नंबर्स आर जनरेटेड हियर. नेक्स्ट कम्स रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप साइज. सो बाय डिफॉल्ट द वैल्यू ऑफ द स्टेप साइज इज 1. स्टेप साइज का जो वैल्यू है हमेशा 1 रहता है. एंड द नंबर्स जनरेटेड विद द डिफरेंस ऑफ 1. और जो नंबर्स है वो 1 के डिफरेंस से जनरेट होते हैं. However, we can generate numbers by specifying the value of step size. हम क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं नंबर जो है स्पेसिफाई करके वैल्यूज़ को अकॉर्डिंग टू स्टेप साइज अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. सो हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इससे जो है जनरेट कर सकते हैं. एग्जाम्पल क्या है? रेंज दिया है 1, 14, 2 is equivalent to 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Now, here one program is given children, program number 5, to print your name 9 times using the loop with range function. Range function use करना है और अपने नाम को आपको कितनी बार प्रिंट करना है? 9 times. तो आपने क्या किया? ये जो कमांड यहाँ पे दिया name is equal to input and then enter your name. So for I in range 0 to 9. अब आपने प्रिंट के साथ नाम लिख दिया. तो आप देख सकते हो ऑन रनिंग द अबव प्रोग्राम आपने अपना नाम लिख दिया प्रीति. सो अब यू कैन सी प्रीति इज प्रिंटेड हियर 9 times. नाउ द नेक्स्ट प्रोग्राम इज टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ एन इनपुट नंबर. मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको प्रिंट करना है इनपुट नंबर का. तो आपने क्या किया? ये प्रोग्राम डाला यहाँ पे. नंबर इज इक्वल टू INT देन ब्रैकेट देन इनपुट देन ब्रैकेट एंटर अ नंबर ब्रैकेट क्लोज. For I in range 1 to 11 के बीच में आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. So we have to put number then x I is equal to num. So I'm running a program, we get the following output. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो है टेबल लिखी हुई दिख रही है. Now let's move on to let us do write a program in Python to find the power of a number. नंबर का पावर फाइंड आउट करने के लिए आप कौन से प्रोग्राम लिखेंगे? दैट यू हैव टू राइट हियर. नाउ लेट्स राइट अबाउट द व्हाइल स्टेटमेंट. चलिए पढ़ते हैं व्हाइल स्टेटमेंट क्या है. द व्हाइल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली. ये क्या करता है? बहुत सारे स्टेटमेंट्स का जो सेट है उसे बार बार है क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है यूजिंग अ लॉजिकल एक्सप्रेशन. एक लॉजिकल एक्सप्रेशन को यूज करके. इवेल्युएट्स टू ट्रू. अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो. When the condition becomes false, अगर कंडीशन false हो गई, the control comes out of the loop. ये जो कंट्रोल है लूप से बाहर आ जाता है. The syntax of while statement are given below. यहाँ पे syntax दिया गया है while statement का और वो syntax क्या है? While then text expression
and then the statement. So here let's take a look at the next program to demonstrate the use of while loop. while loop को demonstrate करना है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि I की वैल्यू है 0 and A की वैल्यू है input, enter a string. While I is less than len A, if A is then bracket I equal to E or A I is equal to S, I plus equal to 1, continue. So this is the program that we have to write down, children, and here is your result that you will be getting. So आप देख सकते हो यहाँ पे letters लिखे हुए हैं, the current letters printed here. Now let's move on to extra byte, and any non-zero value in the while loop indicate. कोई भी जो non-zero value होती है while loop में, वो indicate कैसे होती है, वो हमेशा true condition दिखाती है, whereas 0 indicate always false condition. लेकिन जो 0 है वो false condition दिखाता. तो जब भी यहाँ पे आपको जो है while loop की बात करेंगे तो अगर कोई नंबर है तो वो true condition दिखाएगा और 0 है तो वो false condition दिखाएगा. The while loop using else statement. while loop को हम कैसे यूज करेंगे else statement के साथ? So Python enables the use of else statement with the while loop. Python क्या करता है? हेल्प करता है else statement में while loop के साथ. The else block is executed when the condition given in the while statement becomes false. ये else block तभी execute होता है जब जो condition दी गई है while statement में वो false निकलती है. अगर false है तभी else वाला ब्लॉक चलेगा. तो यहाँ पे हमने while को एक कमांड दिया है, else को एक कमांड दिया है, while में कमांड दिया है कि print I is less than 5, less than or equal to 5, और else print the while loop end here. So आप देख सकते हो कि on running the above program we get the following result. तो उस प्रोग्राम को जब हमने रन किया तो ये रिजल्ट हमारे सामने आ गया और लास्ट में आप देख सकते हो लिखा भी है the while loop ends here. Next comes infinite loop. If the condition given in a loop never becomes false. अगर मान लेते हैं कि कंडीशन जो दी गई है इस लूप में वो कभी भी false नहीं होती है, then the loop will never terminate. तो लूप जो है कभी भी terminate नहीं होगा and run indefinitely और indefinitely run नहीं करेगा. This type of loops is called an infinite loop और ऐसे loops को हम infinite loop कहते हैं. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या examples है. Example है while 1 print hello. Output will be hello will be printed infinite times. Hello जो है कितनी बार print होगा? Infinite times. So to come out of the infinite loop, अगर आपको इस infinite loop से निकलना है, so we can either close the program window or press Ctrl plus C. या तो हम प्रोग्राम के विंडो को बंद कर दें या फिर कंट्रोल के साथ सी को प्रेस कर दें. दिस विल ब्रेक द रनिंग ऑफ द प्रोग्राम. नहीं तो क्या होगा, लगातार जो है हेलो लिखता चला जाएगा. अगर हम ऐसा कर देते तो प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा. एंड इन फैक्ट इन एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इन पाइथन यू कैन प्रेस द की कॉम्बिनेशन. किसी भी समय आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस सी को प्रेस कर सकते हो टू स्टॉप रनिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए. Next comes jump statements. So sometimes there is a situation when the control of the program needs to be transferred out of the loop body. तो कई बार क्या होता है, ऐसे सिचुएशन रहती है जहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल जो होता है प्रोग्राम का उसे ट्रांसफर आउट होना होता है लूप बॉडी से, even if all the values of the iteration of the loop have not been completed. भले ही जितनी भी वैल्यूज है वो कंप्लीट ना हुई हो. For this purpose jumping statement is used in Python. और इस काम के लिए jumping statement को यूज किया जाता है Python में. Python क्या करता है, ऑफर करता है दो तरीके के jumping statements, break and continue, and which are used within the loop, जिन्हें यूज किया जाता है लूप के अंदर. Next comes the break statement. So children, the break is a keyword in Python which is used for bringing the program control. ये एक ऐसा कीवर्ड है पाइथन में जिसे यूज किया जाता है प्रोग्राम को कंट्रोल करने में. आउट ऑफ द लूप, प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप, प्रोग्राम का जो कंट्रोल है उसे लूप से बाहर निकालने के लिए. ब्रेक स्टेटमेंट हॉल्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप. ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लूप के एग्जीक्यूशन को रोक देता है. एंड प्रोग्राम फ्लो स्विच टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप. और जो प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट है वो अगले
पे चला जाता है, जो लूप के बाद स्टेटमेंट दी गई है उस पे। अ सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट विल ब्रेक आउट ऑफ ओनली वन लूप। अगर हमने एक ब्रेक स्टेटमेंट दी है तो वो सिर्फ एक ही लूप को ब्रेक करेगा। द सिंटेक्स ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इज गिवन बिलो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सिंटेक्स है ब्रेक स्टेटमेंट का। सो हमें हैशटैग लगा के लूप स्टेटमेंट लिखना है एंड देन वी हैव टू टाइप ब्रेक। So the program 9 says that to demonstrate the use of break statement in a loop, कैसे हम demonstrate कर सकते हैं break statement को loop में। So for number in range 0 to 12, if number is equal to 7, break print number is number, print out of loop. So on running the above program we get the following output. सो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे जो है नंबर वॉज रिपीटिंग 1 by 1, इट वॉज इन द लूप, बट जैसे हमने टाइप किया ब्रेक स्टेटमेंट इट हैज़ डिस्प्लेड आउट ऑफ लूप हियर। नेक्स्ट कम्स द कंटिन्यूस स्टेटमेंट। द कंटिन्यूस स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड लूप। इन्हें जो है लूप के अंदर यूज किया जाता है। एंड व्हेन अ कंटिन्यूस स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड इनसाइड अ लूप, कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम जंप्स टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। जब ये जो है कंटिन्यूस स्टेटमेंट जो है लूप के अंदर होता है तो ये क्या करता है, कंट्रोल कर देता है प्रोग्राम के जंप को टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप, लूप के बिगिनिंग में। फॉर नेक्स्ट इटरेशन के लिए स्किपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ द लूप फॉर द करंट इटरेशन, और स्किप कर देता है जो भी एग्जीक्यूशन है बाकी जो भी स्टेटमेंट्स है उसका, जो कि उस करंट इटरेशन में है। So here's the syntax loop and hashtag loop statement continue hashtag the code to be skipped. So this is program 10 to demonstrate the use of continue statement in the loop. So this is the program that we are going to type, children, and here is the result. On running the program we get the following result. So ये result हमें मिलता है जब हम इस program को run करते हैं। So what you have to do, you have to run all these programs that we have learned here. Then only you will understand it more better. So now children, let's move on to let's rewind. In Python, the statement that are used to repeat a set of instructions is called iteratives or looping statements. Looping statements are very useful and necessary for developing various applications. Python provides two types of looping statements, for and while. The for statement executes a simple or compound statement for the fixed number of times. The in statement, in operator is used to check if the given values exist in the sequence or not. It evaluates to true if it finds a value in a specific sequence, else it returns false. The range function is an inbuilt function of Python. This function generates a list which is a sequence type. A sequence is a succession of values bound together by a single name. The range function is used in the for loop to iterate over numbers. The while statement executes a set of statements repeatedly using the logical expressions evaluate to true. When the condition becomes false, the control comes out of the loop. If the condition given in the loop never becomes false, then the loop will never terminate and run indefinitely. This type of loop is called an infinite loop. The break is a keyword in Python which is used for bringing the program control out of the loop, and the break statement halts the execution of the loop and program flows switch to the statement after the loop. The continuous statement is used inside loops, and when the continuous statement is encountered inside a loop, control of the program jumps to the beginning of the loop for next iteration, skipping the execution of rest of the statements of the loop for the current iteration. Now children, let's move on to book exercise which is check yourself. Here the A exercises tick the correct option. So children, here the first question is the dash statement allows to repeat a task for a fixed number of time. So we use for statement to repeat a task for a fixed number of time. Next comes the dash statement terminates the execution of the loop. So the break statement terminates the execution of the loop. So like this you have to do the rest of the questions that are given here. Now let's move on to B exercise which is fill in the blanks.
The in operators evaluates to true if it finds a value in the specified sequence, else it returns false. The while statement executes a set of statements repeatedly until the logical expression remains true. So, do the rest of the questions like this, children. Now, let us move on to C exercise, which is write true or false for the following statements. So, here the first one is, if the condition given in the loop never becomes false, then the loop will never terminate and run indefinitely. Yes, this is true. Next one is, we can use do while loop in Python. So, children, this is false. There is no such statement or no such program in Python. So, like this, children, you have to do the rest of the questions that are remaining by yourself. Now, let us move on to D exercise, which is answer the following questions. So, children, here the first one is, what is looping? So, the statements used to repeat a set of instructions in Python is called looping. Now, the next one is, write the syntax for to the for loop. So, the syntax is for, then bracket, then variable, then in, then iterator, then bracket close. So, this is the syntax that you have to write here. Like this, children, you have to do the rest of the questions, find out the answer, read the chapter again and do the question answer and the rest of the exercise yourself. So, children, with this we have completed the chapter. I hope it was interesting and you understood everything. I will be meeting you soon, children, with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.